Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh and very good afternoon. My greetings to respected Principal Sir, but I think he is left. To all the head of the departments of this college, all the faculty members, people from Idara Falahudarain who have organized it, and all my dear students, I welcome all of you to this. It will be an interactive session. It will not be just a lecture. So I would like all of you to pay attention and give your feedbacks also. Okay, give your feedbacks also. I'll be using different languages, English, Urdu, as well as Kashmiri, because the point is that we should be able to understand the topic. And doing seminars, workshops is part of the campaign against drug addiction. But this session of ours should lead to some practical measures which we should be doing afterwards. ये जो हम सेमिनार अभी कर रहे हैं या वीक लॉन्ग जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं, इसका मकसद खाली अवेयरनेस ही नहीं होना चाहिए. इसका मकसद होना चाहिए कि हम प्रैक्टिकली क्या स्टेप्स ले सकते हैं ड्रग एडिक्शन की मैनेज को कर्व करने के लिए. ठीक है? So we have to take some practical points at the end of this session. I'll try to finish it within 40-45 minutes. After that, we will be having 10 to 15 minutes of interaction. ठीक है? ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा वो? हाँ? Okay. So, my topic is about the biological perspectives. I have been following the previous few lectures and talks which were given from is एक हफ्ते, somewhere on the prevalence of drug addiction, somewhere on causes, somewhere on what we can do. So I'll try to restrict on the biological perspectives, but I'll talk about other things also which are very important. So what is a psychoactive substance? जो हम बोलते हैं ना drug या बोलते हैं substance. In scientific terms we call psychoactive substance. So what is a psychoactive substance? What do you understand by that? Any student can. Anybody who can just. कोई नहीं. Psychology students. साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स भी है ना, आप बोलो बेटा, कोई भी ऐसे मजा नहीं आता है. ठीक है? यू हैव टू बी इंटरैक्टिव. ना कैसे सार नहीं अंदर ना शगल से ये मेंटल प्रोसेस को इफेक्ट करता है. वेरी गुड. सो एक्चुअली फॉर एग्जांपल वी आर टेकिंग पैरास्टामोल. इज इट अ साइकोएक्टिव सब्सटेंस? Usually not, because it will not affect our brain. So psychoactive substance is a substance which we take and it has its effect on our mental status. It has effect on our mood. कैसा फील करते हैं, mood, thought, हम क्या सोचते हैं, हमारे सोचने की सलाहियत पे भी वो असर करता है. Consciousness. अक्सर आपने देखा होगा substance abuse patients, they are drowsy, they are not fully aware. ठीक है? हमारी कॉन्शियसनेस पे भी इफेक्ट करता है और हमारे बिहेवियर पे भी वो असर करता है. हम कैसे बिहेव करते हैं विद द पीपल इन द सोसाइटी. ठीक है? नेक्स्ट. सो अब सवाल है कि ये इन ड्रग्स को लेने से ब्रेन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, पड़ता भी है कि नहीं. Why we are stressing on the biological aspects of substance use is also important, because there is a misconception or lack of awareness that people in the society think that substance abuse is it is because of the moral degradation only, okay, or it is because of उस इंसान की खुद की गलती की वजह से.
But we have to understand this aspect also कि इन ड्रग्स के लेने की वजह से उस इंसान के ब्रेन पे भी कुछ असर पड़ता है, जिसकी वजह से वो एक डिजीज या इलनेस बन जाती है। ठीक है, ये बात समझने की। So which areas of the brain does it affect? एक एरिया है हमारे ब्रेन में, एक सर्किट है, ठीक है, जो हमारा ब्रेन है, it consists of different ना पार्ट्स। तो लेकिन ये जो पार्ट्स है आपस में एक यूनिसन, एक सर्किट की तरह है ना काम करते हैं। So there is one circuit, उसको बोलते हैं रिवॉर्ड सर्किट। क्या बोलते हैं? जब हम कोई अच्छा खाना खाते हैं, ठीक है, या जब हम मेडिटेशन करते हैं, ठीक, या कोई भी अच्छी चीज, तो हमें ये रिवॉर्ड सर्किट जो है ये स्टिमुलेट हो जाता है एंड वी फील गुड। ठीक है, बात समझ आ रही है? लेकिन अब अगर कोई साइकोएक्टिव सब्सटेंस लेता है, उसकी वजह से क्या होता है कि ये रिवॉर्ड सर्किट जो है ये ओवरड्राइव में चला जाता है। उस सब्सटेंस की वजह से ब्रेन में एक केमिकल है डोपामिन, ठीक है, तो डोपामिन लेवल्स जो है वो एकदम से बढ़ जाती हैं ब्रेन में, हाँ? और ये जो सर्किट है ये ओवरड्राइव में चला जाता है। हाई टेंशन तार है ना, ताकि पावर ज्यादा ये नहीं होता, ताकि सो दिस सर्किट गेट्स इनटू एन ओवरड्राइव। लेकिन कुछ रिसेप्टर्स जो इस सर्किट में होते हैं, इनको पता चलती है कि डोपामिन लेवल्स जी बहुत ज्यादा बढ़ गई एकदम से, तो वो रिसेप्टर्स खुद ब खुद डाउन रेगुलेट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से डोपामिन ज्यादा आ रहा है। बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर्स वो खुद ब खुद काम करता है। नेक्स्ट, ये वो सर्किट है, ये जो रेड और डार्क ब्लू है, ये वो रिवॉर्ड सर्किट है। ठीक है, ये बाकी नेम्स इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू, जस्ट डिपिक्ट पिक्टोरिकली कि एक सर्किट है जो ओवरड्राइव में चला जाता है। नेक्स्ट, एक पीछे लीजिए। सो वंस द रिसेप्टर्स, जो मैंने बोला ना, रिसेप्टर जब डोपामिन ज्यादा होता है रिसेप्टर्स कम हो जाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि जब नेक्स्ट टाइम वो बंदा वो ड्रग लेता है, उसका इफेक्ट उतना नहीं होता है जितना वो पिछली बार हुआ उसको। क्यों? क्योंकि वहां से रिसेप्टर्स ब्रेन में डाउन कम हो गए, तो उसकी वजह से वो क्या करता है कि वो डोज उस सब्सटेंस का इंक्रीज करता है। उस ड्रग वो मजबूर हो जाता है टू हैव द सेम इफेक्ट, उसको वो ड्रग का डोज ज्यादा क्वांटिटी में लेना पड़ता है। ठीक, जितना ज्यादा लेगा वहां से ये साइकिल बढ़ता जाता है, रिसेप्टर्स कम होते जाते हैं, और इस फिनोमेना को हम टॉलरेंस बोलते हैं। एंड अ पर्सन बिकम्स डिपेंडेंट अपॉन दैट ड्रग, ही नीड्स टू टेक मोर एंड मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ ड्रग, ठीक है, टू हैव द सेम इफेक्ट, एंड अल्टीमेटली नॉट ओनली हिज ब्रेन, द अदर पार्ट ऑफ द होल बॉडी becomes dependent on that medication. This is the neurobiology of addiction. ये समझ आया? अब जो there are three terms which you should know as students. एक तो है use, दूसरा है abuse, तीसरा है dependence. It also depicts the severity of the drug use. Use means कि occasionally वो ये ड्रग यूज करता है, लेकिन उसकी वजह से उसकी बॉडी पे या उसकी जो ऑक्यूपेशनल लाइफ है, सोशल लाइफ है, उस पे कोई असर नहीं पड़ता है। ओकेजनली ही इज यूज। दूसरा हो गया अब्यूज। अब्यूज की डेफिनेशन है कि वो आप ड्रग इतना यूज कर रहा है कि उसकी वजह से बॉडीली हार्म भी उसको हो रहा है, ठीक है, और उसकी वजह से उसकी डे टू डे लाइफ पे, सोशल लाइफ पे, ऑक्यूपेशनल लाइफ पे असर भी पड़ रहा है। That is an abuse. It is one step higher. Then the most severe जो उसका ये stage है, that is dependence. Dependence means when he is completely when his whole life is dependent on that drug. उसको लाइफ में उस ड्रग के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता है, इसीलिए वो खाना पीना भी छोड़ देता है। उसको खाने पीने से भी मजा नहीं आता है, सोना स्लीप से भी उसको कोई इफेक्ट नहीं होता है, all other pleasurable activities भी वो छोड़ देता है। His whole body gets dependent on
that drug, and his whole life revolves along seeking that drug. That is the dependence stage, which is the most severe stage. Okay? Yeah. अच्छा, आप जो ये डिपेंडेंस स्टेज है, we say that it is, मैंने बोला ना, it is a disease now. It has become an illness now. When a person is dependent, it is very difficult for that person to get out of that without any help, because now he has become, it has become an illness now, जिसको treat करना है, ठीक है, medically, socially, psychologically, and it involves complex interactions. Biological factors तो मैंने बोला, इसमें environmental factors भी काम करते हैं, ठीक है, जिसमें availability of drugs is very important. ये मैं थोड़ा बाद में elaborate करूंगा. Psychological factors, उसकी personality कैसी है, या उसकी life, experiences, especially childhood में कैसे रहे. Okay, next. These are some of the common substances. ये मैंने उस ऑर्डर में रखे हैं जिस ऑर्डर में हमारे यहाँ ज्यादा प्रेवलेंस है, ठीक है. Opioids are the most prevalent now currently in Kashmir. Opioids में आता है हमारा heroin, morphine, pentazocine injections, plasmaproximon tablets या codeine, ठीक है. Currently we are having an epidemic of opioid addiction in Kashmir. Previously ऐसा नहीं था. 10 years back अगर आप देखते तो previously cannabis या sedatives ज्यादा थे, लेकिन opioids have now overtaken. It is an epidemic of opioids. Everyone is using now opioids, and that too injectables. ठीक है. उसके बाद cannabis, chars या गांजा, sedatives, sleeping pills, inhalants like ink removers, glue. Some are even using boot polish also. Inhalant. ये जो चार हैं ये ज्यादा प्रेवलेंट है, जो हम देखते हैं हमारे ओपीडीज में, वार्ड्स में. These are the most prevalent. In addition, tobacco, alcohol, and other hard drugs which were not available here are also now being used. Hard drugs में आता है cocaine, LSD, stimulants. These are very expensive drugs and not easily available. But I don't know how these people are getting these drugs also, which is a cause of worry. और इसके effects भी काफी है ना, they are very detrimental. Yes. Previous जो talks हुई है उसमें it has been dealt with detail में दिखाएगा. I just want you to just focus on this table कि trend क्या रही है from 2016 to 2020 तक का अभी डाटा है. 2016 you get 489 patients treated at AIIMS. 2020 में it has risen to 3,500. तो इससे आप लोग खुद अंदाजा कर सकते हो how the trend. And 2022 में तो trend it is growing exponential, ना, exponential. आपको कि linear है, आपको exponentially it is increasing. Next. AIIMS की एक important survey हो गई थी 2019 में across all the states of India. इसमें I want you to ना focus on ये वाले जो मैंने bold किए हैं ना, opioids 4.91, as इसकी prevalence कश्मीर में, हाँ, J&K में, as compare it with the Indian prevalence जो है. Opioids की कश्मीर में national prevalence से ज्यादा है, more than double, 2.5 times. Sedatives की भी ज्यादा है, ठीक है, और inhalants की भी ज्यादा है, as compared to the national average जो है. सर वहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ है 2019 से 2020 की ओर. 2019 डिक्रीजिंग सर. हाँ, उसका very good question. His question is that from 2019 to 2020 the trend has decreased. One of the reason is because ये जो period था ये कोविड का period हमारा रहा, ठीक है, तो हॉस्पिटल में ये जो ट्रीटमेंट सीकर्स है they could not come to the hospital. These are the hospital records which are there. So that is one of the reason. Otherwise कम्युनिटी में जो है वो ट्रेंड बढ़ ही गया है. बट 2020 जो है या 21 में है, अगर आप हॉस्पिटल रिकॉर्ड्स देखेंगे हमारे भी या श्रीनगर के भी, वो कम दिखाएंगे.
because OPDs were closed and people could not get because of the restriction. That is one of the reasons. Very good. So ये तो हो गया. Next. This is one of the study which I want everybody to look at. It was done from Kashmir University in 2013. So I don't know recently क्या है, but just look at it कि sources of substance abuse क्या है community में. 52% got it from कहाँ से? It is a very worrisome trend. किरियान बोल ना सा किरियान बोल. It is हर कोई गली नेबर कंचा आपका कासा. I'm not saying कि everybody, but see the where from people are getting it. Next आता है हमारा next आता है हमारा 29% from the friends. ठीक है. Next आता है हमारा unload dealers या non-local dealers जो है. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा local chemists. ठीक है. And then others. So this will give you an idea कि how easily available the substance is. Again, I am stressing on availability. I will tell you later on why. ठीक है. Sir, as you have mentioned about the first one, can we call them drug peddlers? Which one? The first one. Grocery shops. If they are selling the drug, then of course they are drug peddlers. Okay. Now, what देखो हर एक जो for example there are 10 बच्चे हैं एक community में. Every one of them does not get involved in substance abuse, है ना? Although अगर हम देखेंगे कि एक ही environment में वो रह रहे हैं, ठीक है, एक ही community, एक सबको easily availability है, लेकिन हर एक उसमें involve नहीं होता है. अब रीजन है कि क्या क्या चीजें हैं जो एक जो उनको बोलते हैं हम प्रीडिस्पोजिंग कॉजेस, कि बैकग्राउंड में क्या कॉजेस हैं, ठीक है, जो इस इंसान को प्रीडिस्पोज करते हैं लेटर ऑन फॉर बिकमिंग यूजिंग सब्सटेंसेस. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स which has been seen is abuse from family and others, especially in childhood. ठीक है, childhood abuse is very common, but it is very overlooked, especially in our society. Abuse can be physical, childhood abuse. It can be emotional, ठीक है, it can be sexual also. ठीक? If a child is abused during the childhood, एक psychological scar उसमें develop हो जाता है, ठीक है, and which predisposes him for later on to other mental illnesses as well as substance use. ठीक है. Culture is one of the predisposing causes. For example, alcohol की अगर हम बात करें, in our society the prevalence of alcohol is almost minimal. ठीक है. Or even though the other hard drugs, opioids, मैंने बोला ना exponentially rise कर रहे हैं. Even in spite of that, alcohol की जो prevalence है वो उतना increase. Although now availability has also increased. पहले तो इतनी now available, but still the alcohol वो जो उसका prevalence है वो increase नहीं हो रहा. उसका क्या reason है? कोई बोल सकता है? यहाँ से लड़कियों में से बोल रही हो तो बोलते मान let them, घबराइए नहीं, आप बात कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए. इशू तो इम्तिहान चुन चला किया है, it isn't. अच्छा कोई बोल सकता है? इस्लाम में प्रोहिबिटेड है. वेरी गुड, वेरी गुड. देखो हम कल्चर की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी हमारे अगर हम पेशेंट्स को एडमिट कर रहे हैं ना, मोस्ट ऑफ देम आर यूजिंग मल्टीपल ड्रग्स, 5-6 ड्रग्स. फिर जब हम उसको क्वेश्चनेयर पूछते हैं, अच्छा जिससे अल्कोहल से कोरोना सर एल जहीनस क्या है, शस गॉन. It is a fact. It is a fact. The culture has a very major role to play. ठीक है, in again a predisposing cause. Then, as you know, there are a lot of stressors. ठीक है, external stressors, poverty, job stress,
single parenting, unemployment, divorce. These are the added causes. Exposure to trauma, like natural disasters, wars, okay, conflict. We are a conflict area, there is no doubt about it. Last 30 years, it has been very difficult for everyone. That is also one of the reasons that the trend has increased. Next. ये तो हो गया कि predisposing. What are the things which are going in the background? Now what are the precipitating causes? मतलब अब background के factors हैं. अब कौन सी चीज उस टाइम पे उसको ड्रग की तरफ अट्रैक्ट करती है या मजबूर करती है? उसमें देखा गया है मोस्ट ऑफ द स्टडीज पेयर प्रेशर. पेयर प्रेशर क्या होता है? पेयर प्रेशर को दोस्त वर्ष त्रेश करान काम आख चुन बिजोर करान इहे ठीक है. मंद्राइम गार्डमंस कौन चक्रस तो वन लोग इमो फॉर एग्जांपल हम सिगरेट की बात करें. होमो त्रे लोग जो उष्ण में बिहेव मुश्किल है तो क्या है ठीक है. कुछ गसा और वो बेचारा हो जाता है, उसको लगता है कि आई बुरी मचुस he feels out of the place, and because of the peer pressure he gets, and once they start then they get hooked up. It's like a magnet, it catches you. Okay? Again in youth, sensation seeking, experimentation. जो बहुत सारे पेशेंट्स हमें आते हैं, हम उनको पूछते हैं क्या पार्टिसिपेट किया है स्कूल से कि ना मैं तो बात माजूबूश, but then they continue. Glamorization, like in movies or social media, if any substance is glamorized, then the youth can pick it up easily. Another important thing is many of these patients also have underlying psychiatric illness, depression, anxiety, and one of the reasons they get involved in drugs is to reduce that physical, psychological pain, or even physical pain if they have. Okay? To feel numb, to feel drowsy. Last point है this is also one of the important things which maintains. बहुत सारे जो बच्चे हैं जो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, even after some time they feel that they should not have done it. Most of them, 80% of them, and they want to leave it. But now since whenever body has become dependent on it, अब ये ड्रग उनको नहीं छोड़ता है. The body has become dependent, and अगर ये छोड़ते हैं 2-3 दिन में they have withdrawal reaction, body react करती है. उसको prevent करने के लिए they again मजबूर हो जाते हैं ये फिर से करने के लिए. So to prevent withdrawals, another reason. Next. What are the high risk groups? These are some of the high risk groups: teenagers, young age, children with behavioral issues, dysfunctional families, drivers, and rapid urbanization. आप देखोगे कि जो clusters हैं जहाँ पे ज़्यादा prevalent है, चाहे ना श्रीनगर में भी हम देखते हैं कि जहाँ पे क्लस्टरिंग है बहुत ज़्यादा, ना डेंस पॉपुलेशंस हैं. यहाँ भी बारामूला में भी जो भी हमें मोस्ट ऑफ दे आर फ्रॉम दोस डेंसली पॉपुलेटेड एरिया. सोपोर से हमें आते हैं फ्रॉम द डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज. ठीक है. Children with behavioral issues, again this point I want to emphasize again. Many of the children who have any childhood psychiatric disorders are also prone to develop substance abuse later on. One of the conditions is called ADHD. Psychology वालों ने ना पता होगा उनको, attention deficit hyperactivity disorder. Just to give you an example, just आपको वो context आएगा सारा. Just last week, one of my doctor colleagues, she's a friend also, she's a colleague also, she called me and said कि हमें लगता है कि मेरा जो एक cousin है 17 years old, 11th में पढ़ता है, he is involved in drug abuse. तो I told her कि ठीक है आप ले आओ उसको OPD में, तो we will see. So once we saw that young boy, so he was very agitated, he was very irritable, behavioral changes.
and he was using almost all the drugs in, you know, even hard drugs also. So I was very, it was very distressing. Then we told them to get him admitted because it is very difficult to treat him at home. He was reluctant for admission also. Somehow we got him admitted. So while we were evaluating हमारे residents workup करते हैं, we found that in childhood he has had symptoms of ADHD, which was not picked, which was the parents did not pick up, which was untreated. And ADHD में क्या होता है कि since they are very hyperactive, impulsive, they have attention deficits, जो parents का वो attitude है ना उस बच्चे की तरफ वो भी different हो जाता है. Yeah, you should कैसे करना vote, ये like ना कोई नहीं, ठीक है? ये हाँ, it happens, it is a fact, which causes another distress to that child. Okay? And then they have, in addition to ADHD, they have other then behavioral issues, depressive symptoms. Okay? And इस बच्चे को all those patterns was filling up until when he became a teenager, he started using just to get just to run away from all the troubles at home. And so this was to highlight about the behavioral issues in childhood. Next. अब है कि हम कैसे रिकॉग्नाइज करें, है ना, ये इम्पोर्टेंट है ना. अब आप सब बच्चे हो, देयर आर ऑलमोस्ट 60-70 स्टूडेंट्स हैं, फैकल्टी है, आप लोग अपने अपने घर जाओगे, कॉलेजेस में हो, है ना, नेबरहुड में हो, तो आपको पता होनी चाहिए कि अर्ली साइंस क्या है, कैसे पिक करेंगे कि ये हमारा भाई, हमारी बहन ये ड्रग अब्यूज में इन्वॉल्व तो नहीं है. सम ऑफ द पॉइंट्स, पहला चीज जो है देयर इज चेंज इन रूटीन, उसका रूटीन चेंज हो जाता है. ठीक है, उसका स्लीपिंग पैटर्न चेंज हो जाता है, उसका जो फ्रेंड सर्कल था वो चेंज हो जाता है. ठीक है, वो शाम को देर से घर आ जाता है. ठीक, तो फैमिली के साथ वो कम इंटरेक्ट करता है, अपने कमरे में ज्यादातर बंद रहता है, पेरेंट्स से अब ज्यादा पैसे मांगने लगता है. ठीक है, या आप देखोगे कि पैराफर्नेलिया मींस आप देखोगे कि उसके कमरे में कुछ टैबलेट्स के स्ट्रिप्स होंगे या इंजेक्शंस होंगे. ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द changes which you can see. Next, then there are behavioral changes which can happen. Drugs can also cause sadness also, some of the drugs, especially withdrawal phase mein. They can become irritable, they can have psychotic symptoms, anxiety symptoms, confusion, yeah, drowsiness. Okay? Most of the substances they can cause drowsiness. Okay? Physical signs अगर आप देखोगे, they are not well maintained, they are not well kept. They have usually red eyes, yellowish discoloration of the eyes हो जाती है because of involvement of the liver. Bluish lips, they have tremors, ठीक से वो हाथ उनका नहीं चलता है. Needle marks उनको हाथ में होंगे या stains होंगे. ठीक है, slurring of speech वो ठीक से बात नहीं कर पाते हैं या ठीक से चल नहीं पाते हैं. These are some of the physical signs. Now, what are the various complications, which medical complications which these substances can lead to? इसमें आता है हमारा tobacco, है ना, cigarette smoking. How prevalent it is, है ना? It is very much prevalent, the most prevalent thing. But many do not consider it to be addiction, है ना? But it has been seen that tobacco या nicotine जिसमें active substance होता है, it can cause carcinoma of almost each and every organ of the body, starting from nose, mouth, lips, gastrointestinal tracts or lungs, even bladder, urinary tract. There is no internal organ which is not affected by nicotine. Then of course they have more risk of developing lung cancers, pneumonias. जो हमारे बच्चे इंजेक्ट करते हैं opioids, they have high risk of developing infective endocarditis या heart attacks. अक्सर आप न्यूज़ में सुनते हो कि
a young boy without any reason उसको जी heart attack हो गया and he has died. I'm not saying कि हर एक में ये reason है, but in many of these cases one of the reasons is that they might have been using injectable drugs. Hepatitis C, अब not only opioid जो injectable का epidemic है ना, hepatitis C का भी epidemic start हो गया है because they are using shared needles. तो एक को अगर hepatitis C हो गया तो दूसरे को easily हो जाता है. Almost 90% of the IV जो हमारे आते हैं यहाँ, हम हर एक को वो serology करते हैं test, 90% of them वो positive आ रहे हैं hepatitis C, and it is a cause of concern for greater society because once they will get married, it will pass to the spouse, it will pass to the children also, like HIV जो AIDS है. So it is again a cause of. It can cause infertility and impotence. Almost all substances of abuse can cause infertility and impotence. Immunity इनकी कम हो जाती है. Most of the substances can later on lead to mental illness. एक तो हो गया कि depression या anxiety की वजह से वो start कर रहा है. दूसरा हो गया कि drug की वजह से mental illnesses होती हैं. Like schizophrenia देखा गया है. Even depression या anxiety disorders इनमें होने के chances ज़्यादा है. And of course overdose की वजह से many people can die also. हमारी casualty में पिछले एक दो महीने में कुछ लड़के भी लाए गए. They were brought because of the overdose of opioids especially. Next. ये पिछला वाला photograph. This is photograph of one of our patients who was injecting these drugs. You can see scar marks कितने इसके हैं. इनमें क्या होता है कि जब एक वेन में वे इंजेक्ट करते हैं ना, तो उसमें थ्रोम्बोफिलिबाइड एक इन्फ्लेमेशन हो जाता है उस वेन का. जब बार-बार किया तो वो वेन ही ब्लॉक हो जाती है. ठीक है, फिर उस वेन में स्किन इन्फेक्शन भी साथ में हो, फिर ये दूसरी वेन ढूंढते हैं, वहां करते हैं, फिर उसमें भी हो जाता है. आहिस्ता-आहिस्ता यू कैन सी कि क्या हाल हो गया है. Then these are some of the social outcomes because of the substance. The crime rate increases. It is studied. Well, ये ऐसे ही नहीं मैं बोल रहा हूँ. There are studies which have been done. Crime rate increase हो जाता है. Accidents if they are drunk and driving, है ना, riding the bikes. Domestic abuse के chances ज़्यादा हो जाते हैं. Relationships are broken. ठीक है. Those who are themselves using, उनमें child abuse के chances भी ज़्यादा हो जाते हैं. And most of them then जितना वो ज़्यादा यूज करते हैं ना, बहुत महंगा होता है. 1 ग्राम हेरोइन का इनको पड़ता है लगभग 3000 मिनिमम. 1 ग्राम. Somebody can use, अभी patient एक admit है, he is using 10 grams per day. तो 10 into 3000 को तक हो 30,000. They get involved in ashkana जो अभी हमने बोला, वो उसने चोरी ले लिया, मस्जिदन चोरगासान, ठीक है, गाड़ी से चोरगासान, या they get involved in packing. वह क्या करते हैं, 5 तिपकना, ठीक है, 10 ग्राम लाया उसने, 8 ग्राम खुद को यूज किया, 2 ग्राम उसने बेच दिया. तो उसको वो इससे क्या होता है कि ये ज्यादा एक के इन्वॉल्व होने से 10 और इन्वॉल्व हो जाते हैं. Okay. Now, lastly, I would like to just make you aware about what facilities we are having at Drug De-Addiction Center Baramulla. You can give information to your friends, to your relatives, to your neighbors, okay, that we have the facilities. From the past 3 years, we have worked hard to improve the facilities, especially drug de-addiction facilities. In 2019, जब ये मेडिकल कॉलेज डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से मेडिकल कॉलेज कन्वर्ट हो गया, that time we had only 3 days a week OPDs, जिसमें जनरल साइकियाट्री OPD भी देखते थे, उसी में सब्सटेंस अब्यूज पेशेंट्स को भी देखते थे. In August last year, we got the approval from NDDTC AIIMS New Delhi for starting ATF clinic. ATF means Addiction Treatment Facility Clinic at GMC Baramulla. It is an outpatient clinic जो Monday to Saturday all working days 10 to 4 रहता है,
and it is specifically dedicated to patients of substance abuse. हम उसमें बाकी psychiatric patients नहीं देखते हैं, खाली patients of substance abuse देखते हैं, ठीक है? उसमें हमारा staff भी आ गया है, medical officers, counselors, data managers, ठीक है, nurse, and all the staff has been trained at AIIMS New Delhi. So you will get state of the art services जो AIIMS New Delhi पे available हैं, they are available now at GMC Baramulla. In addition, we have also got free medications for these from AIIMS. AIIMS से आता है वो medication for these patients. They don't have to buy the medication. ठीक है? ये तो हो गया एक. Secondly, 2 years back we started 6-bedded IPD facilities. 6-bedded ward है हमारा वहाँ पे, जहाँ हम इन patients को admit करते हैं for a week or 10 days, जहाँ इनको detoxify भी करते हैं, साथ में इनकी counselling भी होती है, ठीक है? And after that we follow them up. But because of COVID, in 1-2 साल में admissions कम हो गए, now it is picking up again. Next. In addition, we are having counseling facilities, both in IPD as well as in OPD. So हमारे specifically counselors हैं, एक IPD के लिए, एक OPD के लिए, जो इन patients, खाली substance abuse patients को ही देखते हैं, इनकी counseling के लिए.